आपका भी जर्मनी का वीजा डिले या रिजेक्ट हो सकता है। यस, यू हर्ड इट राइट। तो रिसेंटली कुछ लोगों ने जर्मनी के वीजा के लिए तो अप्लाई किया, बट उन्होंने जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो ठीक से फॉलो ही नहीं करी। और आप भी अगर ये मिस्टेक करोगे तो आपको भी मे बी डिले या रिजेक्शन फेस करना पड़े। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे और कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है एंड विच इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन दैट यू कैन यूज़, ताकि आपका जो पूरा प्रोसेस है और जर्मनी आने तक का जो सफ़र है कैसे आसानी से और स्मूथली हो सकता है। ब्लॉक्ड अकाउंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, स्पेशली इफ यू आर अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीजा या फिर यू आर अप्लाइंग ऑन अ शॉन्सन कार्ड फॉर जर्मनी। और इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एक राइट सॉल्यूशन सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन दोनों रिक्वायरमेंट्स के लिए भी फिंटीवा से बेटर कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। एंड इनफैक्ट आज हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप 12,000 यूरो जो आपके ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए लगते हैं वो कैसे आप सेव कर सकते हो। सो नाउ लेट्स गो टू द फिंटीवा ऑफिस इन फ्रैंकफर्ट। Hello, Hi, Komal. How are you? I'm doing good. Welcome It's to been long. Fintiva. Thank You you. are coming thank here you. after 2 years. Yes. And we are so happy to have you back. Thank you so Finally, much. after 2 years, we could manage to come and meet. shoot a full video Yes, now. Yes. Okay, so guys, ये है तस्नीम जो कि Hello. साउथ एशिया की रीजनल मैनेजर है एट फिंटीबा, एंड यू वुड हैव सीन हर इन आवर प्रीवियस वीडियोस एज वेल। बट अभी जब हम फिंटीबा ऑफिस आए हैं, वुड यू लाइक टू शेयर मोर विद आवर ऑडियंस कि व्हाट एग्जैक्टली इज फिंटीबा, व्हाट डज फिंटीबा ऑफर? Fintipa is the #1 blocked account and health insurance provider. We are the pioneers in digitalizing the entire blocked account services and provide tailor-made solutions for health insurance. ऐसे ऑफिस में सब लोग काम कर रहे हैं अभी? Yes, it's almost Friday हाँ. and इसीलिए थोड़ी बहुत ऑफिस खाली है, but अच्छा. this is our marketing team. This is where we sit and we make nice things for you all to help you, to motivate you to come and study and live in Germany. वैसे तस्नीम, आप बताना चाहोगे व्यूअर्स को कि एग्जैक्टली ब्लॉक्ड अकाउंट है क्या? बहुत सारे लोगों को मे बी पता नहीं है जो यहाँ पे पढ़ाई के लिए आना चाहते हैं। मे बी यू कैन क्विकली गिव देम सम समरी अबाउट इट। यस, बेसिकली ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है कि आपको एक अमाउंट होती है अराउंड 12,000 यूरोस जो आपको ब्लॉक करनी पड़ती है। और ये अमाउंट क्यों ब्लॉक करनी पड़ती है? दिस इज समथिंग जो आप ब्लॉक करते हो एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको वही पैसे आपके अकाउंट में मिल जाते हैं। नाउ व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? ये ऐसा नहीं है कि हम फिंटीबा कर रहे हैं या दिस इज अ गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, एंड व्हाट हैपेंस इज गवर्नमेंट वांट्स टू मेक श्योर दैट यू आर कमिंग टू जर्मनी, यू आर वेल सिक्योर्ड फाइनेंशियली और आप यहाँ आके उनके ऊपर एक बर्डन ना बन जाओ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी वीज़ा के लिए। अगर आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं है तो आप एज अ स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर सकते। दिस इज़ लाइक द मैंडेटरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यू नीड फॉर योर वीज़ा। और वैसे वीज़ा के लिए ब्लॉक्ड अकाउंट के अलावा भी एक रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ मैंडेटरी, एंड दैट इज़ अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। सो वुड यू लाइक टू शेयर व्हाट अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस? डज फिंटीबा ऑल्सो ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस? हाउ इज इट सपोर्टिंग स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इंश्योरेंस? सो वी एट फिंटीबा हम लोग टेलर मेड सोल्यूशंस बनाते हैं। 100% जो भी एक स्टूडेंट को लगता है अपनी होम कंट्री से जर्मनी आने के लिए, वी ट्राई एंड प्रोवाइड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको वीज़ा में भी रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। वी हैव द फर्स्ट वन विच इज़ फिंटीबा ब्लॉक्ड अकाउंट, जहाँ पे आपको सिर्फ ब्लॉक्ड अकाउंट मिलेगा। देन वी ऑल्सो हैव फिंटीबा प्लस। इन फिंटीबा प्लस एट नो एडिशनल कॉस्ट यू गेट ब्लॉक्ड अकाउंट, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस वर्थ 95 euros which is free of cost, and then you get the mandatory health insurance जो जर्मनी आने के बाद तुम्हें लगता है public or private. It's based on whatever inputs you give to us while filling the form. उसके basis पे we create like a tailor-made solution and give you the best health insurance that you will require. Okay, and there's also this confusion, students को समझ में नहीं आता कि पब्लिक इंश्योरेंस ले, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ले। तो इस बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो वुड यू लाइक टू क्लैरिफाई कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कब लेनी होती है कौन सी इंश्योरेंस? ये नहीं है कि आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। इट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर कमिंग as a student colleague. A lot of students come here as student colleague, especially जो bachelors वगैरह करते हैं. So उसमें क्या होता है कि they have to come here, they learn the language because bachelors is mostly in German language. Right. So student colleague होता है उसके लिए, because वो एक limited time के लिए होता है. It's like a 1 year course. तो उसमें आपको private health insurance मिलता है.
And for private health insurance, we have Mavista. Then secondly, अगर आप आ रहे हो on Johnson Carter, so again on Johnson Carter you get private health insurance because आपका limited time है. And if you are a student who is coming for bachelor's or master's, but आपकी age 30 years से ज़्यादा है, so then again you get private health insurance because जो student तारीफ होता है वो ऑफ कोर्स आफ्टर 30s इट्स एस्टिमेटेड कि आपके हेल्थ इश्यूज ज्यादा हो गए, आपको बहुत ज्यादा हेल्थ चेकअप्स एंड एवरीथिंग, so that is why about 30 years you have to do private health insurance. Okay. So ये कैटेगरीज हैं जिनको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लगता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस. पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कौन ले सकता है? आप स्टूडेंट हो, मास्टर्स या बैचलर्स के लिए. सो बेसिकली देयर इज अ थॉट प्रोसेस एंड यू आर गोइंग टू स्टे हियर, यू आर गोइंग टू वर्क ओवर हियर एंड यू आर गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So that is why उनके लिए public health insurance होता है. So for masters, bachelors and under 30 years of age, आपको by default public health insurance मिल जाता है. और किसी को अगर confusion भी अगर होगा तो when they are on the Fintiba का platform and they are choosing which insurance to buy, तो already Fintiba is supporting, right, based on the questions they answer कि which is the right insurance. So basically when you fill up the form, जो आपको Fintiba form fill करना पड़ता है, based on your age, based on what university you are selecting, student college है, Johnson Carter, whatever category you are selecting, उसके ऊपर हम आपको एक tailor based solution directly दे देते हैं, provide करते हैं. Okay. It's not your headache because हमें पता है कि which if you are coming from a different country, you will not know कि क्या select करना है. Exactly. और बहुत सारे बच्चों को वही confusion होती है कि कौन सी लेनी चाहिए insurance, even after knowing information, but that is the best part कि Fintiba based on your answers already recommends you कि आपको this is the tailor made right solution one. मिल जाता है. Yeah. Yes. And we have Jonas with us, who is the managing director of Fintiba. So Jonas, welcome. Thanks a lot for visiting us. Thank you Great so to much. see you again. Thank you so much. Would you like to share what Fintiba has to offer? Yes, sure. I mean, talking about health insurance today, I think one of the very complex things, and like with all our solutions, we want to make it really easy, fast, reliable, and to give you the easiest way to Germany also in regards to health insurance, and making sure that you are fully covered until you start your studies. With the health insurance, of course, we, like with all the solutions we do, we focus around offering a easy, fast, and reliable solution, and especially for the health insurance, we want to get you covered really from India through the visa process to enrollment and your stay in Germany, and you can be assured that you will be safe and covered all the way. I think we can also do a perspective, right? A rapid fire of what is the health insurance situation in India versus Germany. Yeah, we also learned a lot how different it is. Health insurance in India, not mandatory. Mandatory in Germany, you will have it by law. Most of the private hospitals in India are owned by big corporate conglomerates. The services depends upon hospital to hospital and it's not regulated. Germany, you have hospitals in every city, and the standard is everywhere the same. And independent of if you are public or privately insured, you will receive exactly the same service. You are one illness away to going bankrupt in India because there's no health insurance and the treatments are expensive. Whatever you need at the hospital in Germany, your health insurance will cover it independent of the kind of health insurance. In India, because you're not an expat, आप आपके doctor say you can speak in your mother tongue, so language is not a barrier in India. In Germany, of course, you might come across some doctors or nurses who don't speak English, but most of them are trained internationally, so you will not have any problems. In India, you don't need to take appointments months in advance before visiting a doctor. It's quick and you will get instant treatment. In Germany, treatment is appointment based, so you will make your appointment and then step by step get a date. So that's the rapid fire India version and Germany version, and I hope you all liked it. So Jonas, you also visited India quite few times, right? For the India meetups. So you have, With you. yeah. So you have also interacted with students there. Yes. So what do you think? What is the popularity of Germany amongst the Indian students, and why Germany? Why should students still consider Germany for their higher education? Yeah, I think popularity is really high, and it's probably better than ever, or at least I can remember, because we have a lot of political cooperation on a country level. So of course governments of India and Germany really trying to get this win-win-win or triple win strategy of student mobility working. And Germany is at the moment, I would say, the alternative of many restrictive English-speaking countries. So Europe, and Germany is one of the biggest countries in Europe, of course, attracting a lot of students, and this is driven by high quality education that many don't know. Many people think it's for free, but it's actually the government who takes over the invest for you, so it's free for students, but at the end it's high investment done by the German government for that. And Germany is a
big and strong economy with a lot of employment opportunities, and the labor laws are very favorite for students. So Germany really tries to get skilled people into Germany because of our demographics, and I think this is exactly how India and Germany fit together at the moment very well. And Jonas, many students are investing such a big amount and they're coming to Germany. So what are a few things that they should definitely be aware of? Yeah, I think most things, or first thing you need to be aware of is you will need a blocked account. I think most of you know. So a lot of money that you put into an account to get your visa, and most important thing is, of course, you get the money back once you are in Germany. That's very important. You also need some cash to bring at the beginning until you have really full access. So definitely bring some spare cash. And I think most important is that you feel safe and secure on the way. And Fintiba, we're really happy that we now have our sister company, Frankfurt International Bank, as part of our solution. So we have a fully German governed bank. The funds are protected by the German government, so really to provide full security, and then also providing a solution that from the visa process until daily banking in Germany, it's all integrated into our bank account. Great, that would definitely help many students who are planning to come to Germany, right? तो सारी बातें तो आपने सुन ली, बट ये कस्टमर सेंट्रिक जो ज़माना है, इस ज़माने में कस्टमर्स क्या कहते हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है. एंड ट्रस्ट पायलट पे अगर आप देखोगे इतने सारे रिव्यूज़ है अबाउट फिंटीबा, बट इसके पीछे एक हीरो है, एंड दैट इज़ नन अदर देन बेली, हु इज़ द पर्सन हु आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस टू योर क्वेरीज. और इसका फीडबैक ट्रस्ट पायलट पे भी आप देख सकोगे. तो हियर वी हैव बेली, आवर ट्रस्ट पायलट हीरो. हाय बेली. Hello, hi. So I've seen your name on Trustpilot quite a lot. So what's your magic and go-to strategy that all the people are so happy with you? Customer care is one of the crucial factors in maintaining the competitive edge in today's market. And for these factors, I look at some of the crucial factors which apply when our customer is here. And one of them is active listening to our customers and understanding their needs. And secondly is loyalty and empathy. We have to put our shoes in the customer's shoes and feel the same way the customers are feeling. And thirdly is the follow-up and feedback. As soon as the customer is here, we have to make sure that the problem is resolved as quickly as fast and the customer receives the feedback. Great, you are doing an amazing job, and I'm sure you would be continuing to help all those who are looking for the answers. तस्नीम, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ब्लॉक्ड अकाउंट और हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा फिंटीबा स्टूडेंट्स को और कैसे हेल्प करता है? So basically every year we have scholarship. This year also we have, आपने बहुत सुना होगा about our golden ticket, silver ticket and bronze ticket, where you get like different amounts of 12,000 in the golden ticket. You have a chance to win €1,000 and 200 euros in our bronze ticket. Please go on our website. वहाँ पे आप check कर सकते हो what are the requirements and everything. Deadline is coming soon. It's 30 September. So please 30 September से पहले आप आपका blocked account खोलिए, fund करिए, and whatever is the requirement, just try to finish it so that you win one of the golden tickets. Apart from that, we have a Fintiba companion tool, which is like a step-by-step guidance. Right from the time you think of coming to Germany, till the time you land, and फिर जो post bureaucracy होती है, even that is everything is given step by steps. You can have timely reminders and stay on track all the time. Apart from that, we have Fintiba ambassadors. Fintiba ambassadors, we have created a really cool community. तो अगर as a student आपको कोई issues आ रहे हैं from coming from India to Germany, please go on our Fintiba ambassador website, and there you can select the city you're going, the nationality of the ambassador, and then you can directly contact them via the social media platforms which they have provided in the website. Apart from that, to give first-hand experience about how life is over here, so that you all can imagine what exactly you all have to take care, what exactly you don't have to do. We organize so many webinars, at least 2 to 3 webinars on like a monthly basis, also in different languages. And we also have webinars on different topics, like अगर you have webinars health insurance के ऊपर होता है, financial planning के ऊपर होता है, bureaucracy after coming to Germany उसके ऊपर होता है. So on different topics, because हम लोग खुद यहाँ पे जो काम करते हैं, we are internationals. So we have taken this long journey of migrating from our home country to a new country, and we know the challenges. We know bottlenecks कहाँ आते हैं, कहाँ अटकते हैं. जो problems हमें हुई है, we as a whole team will try to find the solution and give the best of our knowledge
through all of these webinars. एंड इनफैक्ट 30th सितंबर तक आपके पास टाइम है, अभी भी ओपन योर फिनटिबा ब्लॉक्ड अकाउंट और आपके पास मौका है वो 12,000 यूरो का ये जो गोल्डन टिकट है वो अगर आप जीतते हो तो ब्लॉक्ड अकाउंट पूरा आपका फ्री, बिकॉज फिनटिबा इज गोइंग टू फंड योर ब्लॉक्ड अकाउंट Yes. फिर 12,000 यूरो। So let's see if you are that lucky winner. यस तो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। आप भी अगर जर्मनी आने के प्रोसेस में हो या जल्दी ही वीजा अप्लाई करने वाले हो तो डू कंसिडर फिनटिबा एंड मेक योर लाइफ इजी। और आपको कुछ अगर क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। एंड लेट्स मीट ईच अदर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, auf Wiedersehen।